This is Arpita Jain from G.V.M Girls College, Sonipat. Today, I'm going to teach you about a very interesting subject that is auditing. And today, we are going to discuss about the topic accountancy begins where bookkeeping ends and auditing begins where accountancy ends and the difference between accountancy and auditing. So, let's discuss about the meaning of bookkeeping. Bookkeeping is the art of recording business transactions in the books of accounts. It is mainly concerned with the primary books of accounts and the ledger. It includes tasks such as posting business transactions in the journal and the ledger, totaling them and obtaining the balances further. Now, bookkeeping is usually done by junior clerks as it does not require any in-depth knowledge of accounting. बुक कीपिंग में ज्यादा डीप नॉलेज होने की कोई नीड नहीं होती. नाउ मूविंग फर्दर, लेट्स डिस्कस अबाउट मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी क्या होती है? अकाउंटेंसी is a much wider term as compared to bookkeeping, and bookkeeping is considered as a part of accountancy. So it is rightly said that accountancy begins where bookkeeping ends. From this statement, it is clear that accountancy involves activities such as examination of primary books of accounts, preparation of trial balance, profit and loss account, and balance sheet, and passing the adjustment entries, rectification of errors, etc. Through this, we can say that accountancy is a, that basis of accountancy is bookkeeping. The work of accountancy requires greater competence, knowledge, intelligence, and responsibility. And accountancy is performed by accountant. ये accountant के द्वारा की जाती है. Now, moving further, let's discuss about the meaning of auditing. हम auditing पढ़ रहे हैं, तो अब subject जो auditing है, हम उसके बारे में discuss करते हैं. The scope of auditing actually begins when the work of accountancy comes to end. So it is right accountancy ends. Hence, auditing is completely separate from bookkeeping, and accountancy is accountancy is much lower term as compared to auditing. Auditing is a critical examination of the books of accounts. Auditing में बहुत सारे rules, principles होते हैं, and in this, the basis of vouchers, information, and explanations are done. So it must be kept in mind that auditor should have complete knowledge about the rules and regulations, and he must be a chartered accountant. तो ये था जो हमने डिस्कस किया. Accountancy begins where bookkeeping ends and auditing begins where accountancy ends. Now, without getting delayed, let's discuss about the difference between accountancy and auditing. इन दोनों के बीच में क्या difference है? First point is function. क्या function होता है accountancy का और क्या function होता है auditing? Let's begin with the function of accountancy. Accountancy includes in its scope tasks such as examination of work, bookkeeping, preparing trial balance, final accounts, rectification of errors, etc. जो मैंने आपको पहले बताया. Now, function of auditing. Auditing का क्या function होता है? Auditing includes in its scope examination of work of accountancy so as to ensure profit and loss account and balance sheet has been prepared as per the rules and regulations. Now moving further, objective. Accountancy का क्या objective होता है? Main objective of accountancy is to find out the financial position of the organization. जबकि auditing का objective होता है to certify the truthfulness and correctness of the account. Next is beginning. Accountancy कहाँ से शुरू होती है और auditing कहाँ से शुरू होती है? Accountancy begins where bookkeeping ends. जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया. And auditing, the work of auditing begins
where the work of accountancy ends. ये भी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है. Now, moving further, let's talk about the basis of basis of accountancy. Accountancy is not based on auditing. Accountancy auditing पर नहीं डिपेंड करती. ये एक सेपरेट एंटिटी है, एक सेपरेट एक सेपरेट आइडेंटिटी है इसकी फ्रॉम ऑडिटिंग. लेकिन जबकि ऑडिटिंग इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन अकाउंटेंसी. ये अकाउंटेंसी के ऊपर बेस्ड है एंड ऑडिटिंग हैज नो आइडेंटिटी विदाउट अकाउंटिंग. Next is rules and principles. The work of accountancy is accomplished with the help of certain traditional rules and principles. Accountancy में हमें rules follow करने पड़ते हैं, जबकि auditing में ये कभी भी हम इसको चेंज कर सकते हैं और इसमें इतनी रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत नहीं होती है. नाउ लेट्स मूव फर्दर ऑन द क्वालिफिकेशन. और अकाउंटेंसी में कोई प्री डिटरमिन्ड क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं होती है, जबकि ऑडिटिंग के अंदर in order to do the work of auditing it is necessary to have basic qualifications. और वो जो होता है पर्सन उसको अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होना चाहिए. Now next, moving further on the knowledge. Accountancy. It is not necessary for the accountant to have the knowledge of auditing, whereas in auditing, it is necessary to have the knowledge of the certain rules and principles. Now let's move further upon the status. The person doing the accounting work is a permanent employee of the organization who draws monthly salary. Accountancy में जो person होता है वो एक permanent employee होता है जिसको salary मिलती है. Whereas in auditing, auditor is an independent and external person. इसको fees pay की जाती है, वो भी yearly या फिर annually. Now let's move further on the origin. Accountancy was originated in the year 1494 with the birth of double entry system, whereas in auditing it was established in India with the Companies Act 1913. Now let's move further on the nature. Nature of accountancy is creative क्योंकि इसके अंदर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं, जबकि ऑडिटिंग एक क्रिटिकल टर्म है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन है, इंटेलिजेंट एग्जामिनेशन है. Now let's talk further about the report, which is the last point in accountancy versus auditing. After doing the work of accountancy, accountant need not submit any report about his work to anybody. उसे किसी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करने की कोई जरूरत नहीं होती. Whereas in auditing, auditor after the completion of his work has to submit a report to the person appointing him, in which he certifies the truthfulness, completeness and correctness of the account. तो ये थे हमारे कुछ बेसिक डिफरेंसेस. अब हम इन डिफरेंसेस को थोड़े जानते हैं क्या है. हमें 3 केस लॉज दिए हुए हैं. फर्स्ट इज एप्पल वर्सेस ऑनन डेक्स्टर एंड कंपनी. इसके अंदर जो मैनेजमेंट होती है वो मिसेस एडल एप्पल के हैंड्स में होती है, जिसमें उनके 2 बेटों ने कुछ फ्रॉड किया हुआ होता है. 28,600 पाउंड का. लेकिन जब वो अपने ऑडिटर ऑनन डेक्स्टर को अपने अकाउंट ऑडिट करवाते हैं तो पता चलता है कि उसमें फ्रॉड है. तो बाद में आगे जाके जस्टिस ये होती है कि जो ऑडिटर होता है वो इसके लिए लायबल नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि ही वाज ओनली हेल्ड लायबल फॉर द अकाउंटेंट. ही हैज अकाउंटेड एज एन अकाउंटेंट बट not as an auditor. Then further, on the second case law, which is Maritime Insurance Company Limited versus William Fortune and Sons, 1931. इस केस में भी क्लेम किया गया था विलियम फॉर्च्यून एंड सन्स के अगेंस्ट कि उन्होंने कुछ डैमेज क्लेम किया है 522 पाउंड का. लेकिन आगे जाके जब वो भी अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराते हैं तो तब भी यही जस्टिस से यही डिसीजन आता है कि जो कंपनी जो ऑडिटर था
ही वॉज ओनली एक्टिंग एज एन अकाउंटेंट, वो ऑडिटर के लिए नहीं अपॉइंट किया गया. नाउ मूविंग ऑन अ थर्ड एंड द लास्ट केस लॉ which is लीच वर्सेस स्टॉक्स एंड अदर 1937. इसमें लीच एक पार्टनर था जिसने स्टॉक्स एंड अदर्स कंपनी को अपने अंडर अपॉइंट किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए. 1933 तक उसका काम ठीक चलता रहा, लेकिन 1934 में एक न्यू पार्टनर एडमिट होता है क्योंकि एक पुराना पार्टनर उसकी डेथ हो जाती है. तो जब अकाउंट ऑडिट कराते हैं तो पता चलता है कि कुछ फ्रॉड हुए थे. तो आगे जाके यही स्थिति है कि जो ऑडिटर था वो सिर्फ अकाउंटेंट के लिए अपॉइंट किया गया था, ना ही कि एज एन ऑडिटर. So now, without taking your less time, I would like to conclude that it can be concluded if the auditor is appointed in the capacity of an accountant, then he is an accountant only. हम उसको ऑडिटर नहीं बोल सकते. And last and the final point of our conclusion is that if the final accounts are prepared for any specific purpose, किसी स्पेसिफिक काम के लिए हम अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो ऑडिटर प्रिपेयर करता है, लेकिन वो जब तक लायबल नहीं होता, जब तक उसको किसी ऑडिटर के लिए ही नहीं अपॉइंट किया जाता, he will be termed just as an accountant. Thank you. I hope so. This lecture was very useful for all of you.